Hello students, hope you all are doing well. My name is Jyoti Saini and I'm going to teach you economics. So, what is economics? Let me tell you, economics is the study of process by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competitive unlimited wants of human being in a society. Suppose an economy exists because of two facts. The economy exists because of two facts, and the two facts are firstly the human wants are unlimited. जो humans की wants होती हैं वो क्या होती हैं आपकी unlimited होती हैं. But the second problem that arise its resources are scarce. But जो resources आपको उन human wants की unlimited wants हैं जो उनको fulfill करने के लिए जो आपके resources हैं that are scarce. Suppose for take an example, if I want an iPhone, देन आईफोन क्या है हमारी एक वांट है एंड द कॉस्ट ऑफ आईफोन वुड बी लाइक 1,50,000 but we don't have that 1,50,000 rupees. It means that rupees here are the resources. It means we don't have the enough resources to fulfill our wants and the wants of our want and the want is iPhone here. So इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर resources क्या है आपके scarce हैं but the wants unlimited. When you get the iPhone, you will there are next one that will be aroused to having a MacBook, to having a personal bike, to having a car there. तो these are called wants are unlimited. अनंत है आपकी wants, इनकी कोई limit नहीं है यहाँ पर. Then subject matter of economics. Economics is जो है आपकी broadly divided into two parts. The first one is the macro and the second one is the micro and macro. Now the micro क्या होती है आपको सिर्फ इसको एक वर्ड से याद रखना है that is individual. You will relate the microeconomics only with the individual and the macro with as a whole. What does it mean now? Suppose microeconomics, we clearly see that is the study of the behavior of different individuals. See, different individuals and organizations within an economic system. एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपके इंडिविजुअल्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बिहेवियर जब आप स्टडी करते हो वो आपकी स्टडी आपके अंडर आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ऑन द सेम वे macroeconomics is the study of overall economic phenomena or the economy as a whole. जब हम इसकी study as a whole, the economy as a whole की हम study करते हैं that will include in your macroeconomics here. So these two are the subject matter of economics. Now the second thing, macroeconomics study about macroeconomics. In macroeconomics we will study about like you will see all the chapters that you include in your microeconomics books में. तो आपके सारे के सारे जो chapters होते हैं that will as a individual part होते हैं. Like you can say your product pricing, consumer behavior, factor pricing, economic condition of section of people. Like these all others you will read or you will learn thoroughly about in further classes. Same here in the macro you can see these are the part as a whole. If you calculate the national income, first to calculate the national income, you should have the income of an average income or the per capita income of every individual. After having the income of individuals, you will be able to calculate the individual of per capita as a whole. So you can say that in the macroeconomic जो है आपकी that is totally based on microeconomics because till the time you doesn't have the individual study the individual's data you wouldn't be able to you wouldn't be able to compute the as a whole data यहाँ पर. तो for just suppose in a national income I told you before as well. In the same things the general price level and the interest rate is same for all the countries. Balance of trade and balance of payment, here you will कैलकुलेट योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कैसे देख रहे हो इसका एज ए इकोनॉमी एज अ होल. यहाँ पर जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कैसा है वो उसका रेवेन्यू आपकी जो रेवेन्यू कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर आप कितना दे रहे हो. यहाँ पर एक पर्सन का कैलकुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको एज अ इकोनॉमी एज अ होल यहाँ पर. तो मैक्रो क्या है आपका वाइडर कंसेप्ट एंड मैक्रो इज योर नैरो कंसेप्ट. ऑलराइट. Now the term come business economic.
Now, what is business economics? Business economics enables application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and the practice. Suppose in the economic, you have seen a lot of data about these statistics, about your sensors. So you have just studied in a theoretical way. But when you are going to in a villages to calculate the data, to collect the data, then you are doing that theoretical terms in as a practical manner. So that is known as your business economics. जब आप किसी पढ़ी हुई चीज को आप प्रैक्टिकली यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, उसको आप बोल दो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स. अगर आप इसकी दूसरी टर्म में देखो आप, then use of economic analysis, use of economic analysis to make decisions, business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. When a business took the help of economic analysis, took the help of economic analysis for what? To take business decision. This is called your business economics. Suppose in market you are having the demand of like 1000 units, but you don't know about the demand, like how much demand the consumers are demanding in the market. But in your business you just manufacture or you just done the production of 2000 units. It means that 1000 units is your kind of waste, or you can say it could be prove your sale loss here. So if you have the market analysis, if you know before that the how much the demand the consumers are demanding in the market, how much the sale is required for you to produce the production or produce the manufacturing products here, so but you don't know it before, so for that you need here the economic analysis, economic एनालिसिस. सो इफ यू हैव दिस इकोनॉमिक एनालिसिस, अगर आपको ये पहले से ही पता होता है कि 1000 यूनिट्स की डिमांड है, तो आप 2000 की यूनिट की प्रोडक्शन ही नहीं करते यहाँ पर. सो दिस इज द थिंग्स कि यहाँ पर अब क्या होगा, जो ये बिजनेस होगा ये आपकी इस इकोनॉमिक एनालिसिस की हेल्प लेगा, एंड आफ्टर डूइंग द इकोनॉमिक एनालिसिस ही विल डिसाइड, ही विल टेक द डिसीजन. अब उसने डिसीजन लिया कि ओके द डिमांड आर ऑफ 1000 यूनिट्स, तो आई विल प्रोड्यूस ओनली 1000 यूनिट्स हियर. तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका बिजनेस डिसीजन आपने लिया है यहाँ पर, और जिसको आप बोल दोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स. होप इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर. ओके, द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक. देखो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप क्या बोलोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स का आप नेचर लेते हो, द फर्स्ट वन इज साइंस. साइंस कैसे होगा, देखो साइंस देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन योर साइंस. You have heard about the law of gravity, law of न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा. तो ये क्या है, आपके प्रिंसिपल्स है, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं. इट मीन्स दे आर फिक्स्ड, you can't do any changes in your principles. It's in the same case in economic there are some rules, there are some principles, like they are the laws. You are about law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility, law of variable proportions. So you can't do any kind of adulteration, any kind of alteration in these kinds of law. So that's why the economic is science. Second, the based on microeconomics. I told you earlier as well, if you don't have the data, you don't have the analysis of microeconomics, you wouldn't be able to conclude the data in your macroeconomics here. तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक आपके पास माइक्रोइकोनॉमिक्स का डेटा नहीं है, आप मैक्रोइकोनॉमिक्स को यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर सकते हो. इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस. ये वही चीज आ गई आपकी कि इसके अंदर जो मैक्रो एनालिसिस होंगे उसके एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर नीडेड होंगे. यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इसके अंदर आपके डिफरेंट थ्योरीज आएंगे, जो थ्योरीज की आपके मार्केट थ्योरीज हैं उनको आपको यूज करना होगा यहाँ पर. प्राइवेट एंटरप्राइजेस और मार्केट्स की जितनी भी थ्योरीज होंगे यू हैव टू यूज दैट. pragmatics in approach is called your pragmatics मतलब flexibility. Now here is a question, if I'll say the economics is an science as well as art, is it true? Yes, is it true? Why? Because आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर लॉस भी हैं प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है यहाँ पर. इफ यू वांट टू
make a conclusion, make a solution to any kind of problem, then you have the authority to deal with that according to your approach. तो यहाँ पर क्या होगा, pragmatism in approach, आप किसी की solution के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेटजीज के अंदर, लॉस के अंदर नहीं, सिर्फ आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर आप चेंजेस करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होगा, इसके अंदर आपकी दो चीजें आएंगी, फर्स्ट आएगा आपका स्टैटिस्टिकल एंड द सेकेंड वन इज मैथमेटिकल। These two both are include in your economics. How? Statistical you know that economics के अंदर आपके पास जो भी डेटा होता है, प्रीवियस डेटा होता है। स्टैटिस्टिकल आपने सुनेंगे, आपने इस तरीके के चार्ट्स आपने देखे होंगे, ये क्या है आपके स्टैटिस्टिक्स, द प्रीवियस डेटा के बेस पर जब आप आज के डेटा को कंक्लूड करते हो और दोनों डेटा को यहाँ पर कंपीट करते हो, तो ये क्या होता है, कंपेयर करना है जो उसके स्टैटिस्टिक्स के बेस पर यहाँ पर, तो जो डेटा है आपके पास वो क्या होगा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल, इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स आपने सुनोगे, इलास्टिसिटीज आपकी जो आप कंक्लूड करनी होती है, आपने नेशनल इनकम यहाँ पर कंप्यूट करनी है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल भी हुआ आपकी नेचर यहाँ पर। तो जो इकोनॉमिक है इट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इट मीन्स इट इज स्टैटिस्टिकल प्लस मैथमेटिकल इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इज व्हाट शुड बी। So what are the things that we should use, that we have to use, are be included in your business economics. So these are included in your normative in nature. Next, these are the same, the micro and the macroeconomics. Now here are three central problems. कि what are the three central problems, that are what to produce, how to produce and whom to produce. इसमें क्या होगा आपका what to produce, what goods are to be produced in your society, ठीक है। Since the resources are limited, every society has to decide which goods and services should be produced and how many units of each good should be produced, like what and how many units. This is your first problem, क्या बनाए और कितना बनाए। Next problem arise, how to produce. Now how to produce, there are basically two techniques. First, when we are producing the goods, we should use the capital or we should use the labor. कि what kind of technique we can use, by using the labor we will produce our goods, or by using the capital in like machines, or by giving the cash we should produce our goods. So these are two techniques from which you have to choose the one, कि which technique should we opt to production, to manufacturing our goods. The third thing is for whom to produce. नाउ अब आपकी चीज होती है आपने कितने बनाने ये भी आपको पता चल गया, हाउ टू प्रोड्यूस ये भी आपको पता चल गया, अब बनाए किसके लिए यहाँ पर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ द गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर आपका आएगा चैनल, कि हाउ द गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द थिंग्स इन देयर लेवल, लाइक योर फर्स्ट लेवल, देन मिडिल क्लास लेवल, ये आपका लोअर लेवल, then your upper level. I'll write here lower level, middle level class and luxury level. So now you have the choices, like we are doing the production, then for which level we should do the production. Like for the lower level we need to produce the inferior goods, the giffen goods. For the middle level we used to produce the normal goods, and the for luxury level we used to produce the prestige goods. तो नाउ वी हैव द चॉइसेस कि विच काइंड्स ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको किस क्लास के लेवल के लिए आपको प्रोडक्शन यहाँ पर करनी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके प्रोडक्ट का वो आपको कैसे करना है। सो हियर आर द प्रॉब्लम्स, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce. Now for to solve these problems, three economies arise, and the name of these economies are capitalist economy, socialist economy and mixed economy. In capitalist economy, use of tool of prices mechanism, you can say that the full control is of private sector. It means the private sector will play the dominating role here. In capitalist economy, the whole control is given to the private sector. Private sector will lead, private sector will produce according to their own need, according to their own technique. It means the government has no role in these kind of economies, in capital economies. Second is socialist economy. Here the full control is over
government. Now here the government is the only factor that will decide which goods are to be produced, how the goods are to be produced, and for the whom goods are to be produced. And in the mixed economy, the control is of both private plus government. This economy is ruled out in our India. Here, the government and the private sector both will decide the three problems and the conclude the solution according to the problems here. यहाँ पर कोई एक सेक्टर यहाँ पर डोमिनेटिंग नहीं होता, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं. ये इकोनॉमी आपकी रन होती है हमारी इंडिया के अंदर. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज यूज्ड टू हैपन इन योर यूएसए. सोशल इकोनॉमी यूज्ड टू हैपन इन रशिया, Japan, China. So these are the examples. Now the demand. Now what is demand? Suppose अब डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके. उससे पहले हम कहते हैं डिमांड मीन्स डिजायर और विश टू बाय और कंज्यूम इट डिमांड कमोडिटी और सर्विसेज बैक्ड एंड एडिक्वेट एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. देखो इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताती हूँ. आपकी डिमांड बनती कैसे है. सबसे पहले आपको किसी चीज की वांट, इच्छा आपकी जरूरी, ठीक है यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए यहाँ पर, ठीक है. वांट तो आपकी अनलिमिटेड होती है. उसके बाद आप देखोगे कि क्या उस चीज की डिड आई रियली नीड दैट प्रोडक्ट, क्या मुझे उस प्रोडक्ट की लिटरली में नीड है. उसके बाद चलो ठीक है, अगर आपको नीड भी है देन यू विल सी कि व्हाट इज योर परचेजिंग पावर, दैट इज योर औकात. परचेजिंग पावर आपकी यहाँ पर कितनी है. यहाँ पर अगर ये तीनों चीज आपकी मेट होती हैं देन आप क्या करते हो, आपकी एक डिमांड अराइज होती है उसके बाद. तो डिमांड के अंदर आपके थ्री फैक्टर्स आते हैं. फर्स्ट वांट, देन नीड एंड देन परचेजिंग पावर इज इक्वल टू डिमांड. नाउ देयर आर सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. जिस चीज से आपके क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जो डिमांड होती है वो आपकी इफेक्ट होती है. फर्स्ट वन इज योर प्राइस ऑफ कमोडिटी. यू ऑल नो दैट इन प्राइस and demand there is a negative relation. It means there is a inverse relation. How the inverse relation? If the price of a commodity increase, the demand of that commodity will get decrease. If the price of commodity will get decrease, then the demand will increase. So this is your inverse relationship. Price of related commodity. Now in related commodity there are two goods. First is substitute goods and the second is complementary goods. Income of the consumer. Here if the income that is denoted by Y, if your income increase then the demand of a product will decrease. If the income will decrease, the demand of a product will decrease. Obviously बात है, if your income will decrease it means your purchasing power is increasing, and your purchasing power is increased, it means you can afford the product that you are not able to do it before. So it means now you can afford the product. It means now you can go to the market and demand that particular product here. So this is your income of consumer. And the taste and preference. In the taste and preference will be favorable, then the demand will increase. If it is unfavorable, then demand will decrease. Second thing is consumer expectations. Now consumer expectations will be around like एक second, sorry for the inconvenience. Consumer expectation. If you see, the consumer is hoping that in future the supply of particular product will increase, तो you will not going to purchase that item now. आप अभी उस प्रोडक्ट को खरीदोगे नहीं. इसका मतलब नाउ डेज में जो डिमांड होगी वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो गई. बट इफ यू थिंक इन फ्यूचर द सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, कि ये प्रोडक्ट आपको थोड़े टाइम बाद नहीं मिलेगा, तो उसका क्या करोगे, यू विल बाय द प्रोडक्ट राइट नाउ हियर. So nowadays the demand will increase. So this is how the determinants of demand will impact the consumer expectations will the affect your demand here. And the other factors आपके कुछ भी आ सकते हैं उसके अंदर, जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई दिक्कतें आई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है. So these will all increase or decrease your demand. Yes, now the important topic is your law of demand. लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड में आपने एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हियर प्राइस एंड डिमांड. अगर मैं बोलूँ आपको देयर इज अ, इफ प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज, राइट.
but according to law of demand, it is not 100% right. Why? Because if price will increase, the quantity demanded will get decrease here, not the demand. See, demand will never be increase or decrease. The effect on will be on the quantity only. Suppose if you are having 100 rupees and you are taking the burger, suppose 50 burger each, it means you are taking 2 burger in 100 rupees. If the price of a burger increase from 50 to 70, now in 100 rupees, how much burgers you will get? One burger. So right now, will you be not demanding for the burger? Now you will not having the craving of to eating burger. You have. It means the demand for burger is same, but the only thing that is affecting right now, you will get only one burger right now. So the demand is get, क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग नॉट द डिमांड. इफ अगर आपकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो आप बर्गर ही नहीं खरीदोगे यहाँ पर. बट यू आर परचेजिंग द बर्गर राइट नाउ, बट द ओनली थिंग दैट चेंज राइट हियर इज द क्वांटिटी ऑफ बर्गर नाउ डिक्रीज फ्रॉम 2 to 1. So this is the only thing. So you have to learn or you have to remember this thing. The law of demand state that price of a commodity fall, the quantity demanded of it will rise, and if the price of a commodity rises, the quantity demanded will decline. So this is the basic difference and the basic thing that the students will forget and lose their marks here. Now there is an inverse relationship, obviously inverse relationship. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है when the price of a product is 5, the demand is 10. When the price is decreased, your demand is increase. When price will decrease more, demand will increase more. So this is the law of demand. Now the movement along the demand curve. This is the most important thing in your law of demand, movement and the shift of demand curve. Now the basic difference between the contraction of demand and expansion of demand. Now the students will get confused. In contraction of demand, the demand will increase or price will increase, or upward movement which is upward movement, which is downward movement here. Let me clear this thing. Suppose this is your diagram. I am making two diagram here. Here is your price and here is your quantity. Now what you need to remember is, first is your contraction of demand, second is your expansion of demand. Now these both are movement. In movement you just see the price. In movement you just see the price. What you will see in movement? The price only. If price are decreasing, then this is your downward movement. And if price are increasing, this is your upward movement. See, no confusion. Now see the next thing. Up, just see the relationship. If price will decrease, demand will increase. डिमांड से यू विल फैक्ट, इफ डिमांड से आप कनेक्ट करोगे यहाँ पर एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? टू एक्सपेंड समथिंग, चीजों का बढ़ना. सी, डिमांड इज इंक्रीजिंग हियर, इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. डिमांड इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स एक्सपेंशन. हियर अगर आप किसी चीज का प्राइस विल गेट इंक्रीज, द डिमांड ऑफ दैट विल बी डिक्रीज. इट मीन्स डिमांड विल डिक्रीज मतलब कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, आपका किसी चीज को कोई सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई उस चीज का, तो हो गया कम हो गया यहाँ पर. सो हियर इज द ओनली थिंग, यू विल सी द मूवमेंट from the price and the demand from the demand curve itself. Now here see, if your price is decreasing, then here is your demand is increasing. Now which is the movement here is your price से relate करोगे आप, that is downward movement. एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में आप क्या बोलोगे? डाउनवर्ड मूवमेंट, डिमांड इज प्राइस डिक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. In the same case, if we say from this price we are having the quantity this one. If price will increase, demand will decrease. Then price are increasing, then it is your upward movement. And with the increase in price, your demand is getting decreased, then it is your upward movement, and the demand is your contraction of demand.
Now hope you will get this concept very clear from this concept. From the moment you will just only relate the things with the price. In moment, go with the price, then see the relationship, and then according to the demand you will see the contraction and expansion of demand. Hope it's clear to you. And if we see the shift in demand, that is very easy. Shift in demand curve. See, shift in demand curve is, in the shift in demand curve, the price is your constant, and here movement में other factors are constant. Remember this thing. Here if your demand curve is this one and demand curve moves from this curve, now here you can say the price is fixed. In both the demand curve your price is totally fixed here. Then what could be the reason behind increasing or decreasing the demand? Suppose we can take the example, हो सकता है कि यहाँ पर the income of an consumer is increased. So when the income is increased, the purchasing power will get increased. That means the demand will get increased. So this is known as the demand will get shift from the right one, from D to D1. So this is known as your rightward shift and shift. And this happens in reciprocal things. Suppose this is your D and this is your D1. If the income will get decreased, then purchasing power will get decreased and your demand will get decreased. So it means the D curve shift from right to left. That means the demand will get decreased. So this is known as your leftward shift. So hope this is clear to you all, and this is all about today. Thanks for your time, all of you.